Good morning, students. Welcome to the BST class. We had done objectives of management on the last turn. So today we'll start with importance of management. This is NCERT page number 11. Why is management essential or important in all types of organizations? That is mentioned here. The first one is management helps in achieving group goals. You remember in management, what does management do? It unites the different efforts of various individuals in order to work towards a collective goal. अलग अलग लोगों के डाइवर्स एफर्ट्स को यूनाइट करता है ताकि एक कॉमन गोल अचीव हो. सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स बाय गिविंग अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन सेकेंड इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. Now, how does management increase efficiency? It divides the work into small lots, and each small lot is performed by a specialist. So, there is least wastage of efforts and time. This is how management increases efficiency. So, here it is mentioned. Management increases efficiency by reducing cost and increasing productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling. Then next is management creates a dynamic organization. We had done what is dynamic, which keeps on changing with the changing business environment. So management helps to create a dynamic organization because it helps people to adapt to these changes so that the management or the organization is always in competition with other firms. Like if one place demonetization is taking place, so they'll have to use something other means, like instead of cash they'll start using Paytm or EFT transfers or something, so that they can remain in competition. Like now also you cannot physically sell your goods, so many of the competitive firms, what they've started selling online. So management creates a dynamic organization because it helps the people to adapt to these changes so that they can be in competition with others. So here it says management creates a dynamic organization. Here the keywords are given. Then management helps in achieving personal objectives. Personal objectives means the objectives of the workers, what they want to achieve. What do workers want? They want a good salary. They want good perks, that is anything apart from salary, like money for the diesel or their children's school fees or medical allowance. So in personal objectives we have those salaries and all things. Then is respect. They want respect also, and they want chances of promotion also. So how does management help in achieving personal objectives? So here the keyword is through motivation and leadership. They help achieving personal objectives through motivation and leadership. And because of motivation and leadership, the management helps individuals to develop team spirit, cooperation and commitment to the group success.
Now, what is motivation? Like, अगर आप बहुत कुछ अच्छा करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको शाबाशी देते हैं. क्यों देते हैं? आपको मोटिवेट करने के लिए. अगर आप बहुत अच्छा कुछ करते हैं तो लोग आपके लिए क्लैपिंग करते हैं. वो क्यों है? मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप और अच्छा काम करें. लीडरशिप, मूविंग फॉरवर्ड सो दैट अदर्स कैन फॉलो, सो दैट इज लीडरशिप. तो मैनेजमेंट दो काम करता है, मोटिवेट करता है, लीडरशिप करता है, ताकि इंडिविजुअल्स में टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन डेवलप हो. The next is management helps in development of society. How can management help in development of society? Because it provides, आपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, एम्प्लॉयमेंट देना, ट्रीज लगाना, इन्वायरमेंट को केयर करना. तो ये सारी चीज़ें करता है. तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग good quality products and services, creating employment opportunities, adapting new technology. So by all these three things, it helps in development of the society. Okay, so this is importance of management. Next we'll take on nature of management. Management as an art, management as a science, and management as a profession. All things will take up together nature of management. So for today we'll only take up nature of management as an art. Can management be said to be an art? Management as an art. This is page number 12. Okay. So, management is an art, is a pure art, because it has three essential features that make it as an art. What are those three features? So, we'll do in detail. The first one is existence of theoretical knowledge. Like in any form of art, that is singing or dancing or any form of art, you have theoretical knowledge. Same way, management is also based on theoretical knowledge. Management is also based on theoretical knowledge, and these theories have been written by various persons. These theories have been propounded by many management thinkers. Okay, so management is an art. जैसे जब आप गाना गाते हैं तो आपकी बेसिक थ्योरी है सारे गामा पा, उसको पता होगा तभी आगे कर सकते हैं. इसी तरह से मैनेजमेंट में भी कुछ थ्योरीज होती हैं जो पढ़नी होती हैं और तभी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आगे आप पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर. तो ये सब क्या है? थ्योरीज है. इनको पढ़ते हैं तब मैनेजमेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स A.R. रहमान ने भी वही सारेगामापा पढ़ा, अनु मलिक ने भी वही सारेगामापा पढ़ा, शंकर महादेवन ने भी वही सारेगामापा पढ़ा, बट तीनों की म्यूजिक्स डिफर करती हैं. क्यों डिफर करती हैं? तो जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस किया पर्सनली, उसी तरह से उनका म्यूजिक आया. सो मैनेजमेंट में भी यही चीज है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. कैसे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? तो कोई भी मैनेजर ये जितनी भी नॉलेज है वो अपनी तरह से यूज करता है और इसी वजह से वो पर्सनलाइज्ड नॉलेज को अप्लाई करता है. लाइक हियर अ मैनेजर अप्लाइज
his acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of the realities of the given situation. And this gives rise to different styles of management. So ये personalized application भी यहाँ है. Then based on practice and creativity, that is number 3. Like art is based on practice and creativity. जितना करेंगे उतना और बेहतर होते जाएंगे. The more you practice, the more you learn. उसी तरह से जैसे म्यूजिक में कहते हैं रियाज ज़रूरी है, एक्सरसाइज में कहते हैं अभ्यास ज़रूरी है, डांस में कहते हैं प्रैक्टिस ज़रूरी है. सेम वे जितना मैनेजमेंट को, उनकी थ्योरीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा मैनेजर बनेंगे. तो एक अच्छा मैनेजर सारी प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन सब चीज़ों को एक साथ लेता है और उसी वजह से वो एक अच्छा मैनेजर बन पाता है और उसके अंडर की टीम एक अच्छी मैनेजमेंट कर पाती है. सो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. हाउ? So here it says a manager applies these scientific methods and body of knowledge to a given problem. A good manager works through combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovation. So all these 3 features are present in management. So it is said that management is a pure art. Okay. So this is the first nature of management. Management is a pure art. Thank you for now. Join you in the next class.